Hello my dear students, I welcome you all in class 4 social studies and today we are going to learn about animals, minerals and fuels. Natural resources, animals. What animals give us? Some animals are used as means of transport. Horse and camel. Horse. Horse is useful as a means of transport. Horse is used in games called polo. Horse is useful as pulling cart. Elephants and donkeys carry things for us. Sheep gives us wool. Ox. Ox is useful for farming. Ox is useful for pulling cart. Hens gives us eggs. We get meat from animals such as goat and hen. We get milk from cows. Dog. Dog help us protecting a house from thief. Dog help police catching thief. Cats guard your homes too from mice. We must take good care of our pets. Animals raised by us for our use are known as livestock. जिन जानवरों को हम पालते हैं वही हमारी जमा पूंजी होती है, उन्हीं से हम काम लेते हैं. They are useful to us in many ways and are an important natural resource for us. हम उनसे कई तरीके से काम लेते हैं और वो हमारे को मिला हुआ प्रकृति से एक बहुत ही अच्छा संसाधन है. Some animals raised by humans are cattle, cows, buffaloes, sheep, goats and camels. कुछ जानवर जिनको मनुष्य पालते हैं वो कौन कौन से पशु हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट. Hens and ducks, fish and other water animals. मुर्गी, बतख, मछली और दूसरे पानी वाले जानवर भी मनुष्य पालते हैं. Minerals. What are minerals? Minerals are valuable natural resources, being finite and non-renewable. They constitute the vital raw materials for many basic industries and are a major resource for development. What is the importance of rocks and minerals? Minerals are used in construction, utensils, machinery and many more. Used in making acids, used for chlorine, mineral waters, photography and for medicinal purposes. This is the heart of industries. It is a source of foreign exchange and a symbol of development. What are fossil fuels? Fossil fuels are some of the most important energy sources in our world today. They are responsible for everything from heating our houses to fueling our automobiles. Coal, oil or petroleum and natural gas are considered the three basic fossil fuels. They are created by the fossilization of plants and animals. One major problem is that we are withdrawing oil, gas and coal from our natural bank of solar power without making any significant deposits. Fossil fuels take millions of years to form and are not renewable within a human lifespan. Therefore, once we consume all the available deposits, there will be none left for future generations. Basically, there are three types of fossil fuels: coal, petroleum and natural gas. Coal is a solid fossil fuel, petroleum is a liquid fossil fuel and natural gas is in gaseous form. How coal is formed? Before dinosaurs, many giant plants died in the earth's swamps. Over millions of years, the plants were buried under water and dirt. Heat and pressure has turned the dead plant matter into coal. Now, what is the formation of petroleum and natural gas? Tiny marine plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time,
the marine plants and animals were covered by layers of silt and sand. Over millions of years, the remains were buried deeper and deeper. The enormous heat and pressure turned the remains into oil and natural gas. Today we drilled down through layers of sand, silt and rock to reach the rock formations that contain oil and natural gas deposits. Rocks on the earth are made up of substances called minerals. जो हमारी पृथ्वी पे चट्टानें मौजूद है वो कई खनिज पदार्थों से मिलकर बनी है. मिनरल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स और ये खनिज पदार्थ प्रकृति से मिले हुए हमें दूसरे खास साधन है. The minerals obtained from the earth are in an impure form. जो खनिज पदार्थ हमें पृथ्वी से मिले हैं ये शुद्ध नहीं होते हैं, ये बहुत गंदे होते हैं. They are purified and used to make a number of things. उन्हें हम शुद्ध करते हैं, सही ढंग से करते हैं और फिर उनसे कई तरह की चीजें बनाते हैं. We get metals such as iron, copper, aluminium, gold and silver from minerals. हमें कई तरह के metals minerals से मिलते हैं जैसे कि iron, copper, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, लोहा, जस्ता और तांबा, सोना, चांदी. दीज आर शाइनी एंड हार्ड. ये सब क्या है? बहुत चमकदार होते हैं और ठोस होते हैं. वी ऑल्सो गेट अदर सब्सटेंसेज सच एज डायमंड्स, माइका एंड लाइमस्टोन फ्रॉम मिनरल्स. हमें और दूसरे कई तरह के पदार्थ इनसे मिलते हैं जैसे कि डायमंड, माइका और लाइमस्टोन. Fuels such as petrol, diesel, natural gas and coal are also obtained from the earth. हमें पृथ्वी से कई तरह के फ्यूल्स भी मिलते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस. पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस आर obtained from petroleum और ये सब हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं. The mineral resources on the earth are non-renewable. जो खनिज पदार्थ हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं वो आसानी से हमें नहीं मिलते हैं. Once used up, they will not be available to us anymore. एक बार पूरे यदि हमने काम में उनको ले लिया तो फिर वो या तो हमें मिलेंगे ही नहीं या कई सालों के बाद में हमें मिलेंगे. Minerals such as coal and petroleum, which give us fuels for providing energy, are being used up rapidly. खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला और पेट्रोल जो हमें कई प्रकार के ईंधन देते हैं और जो लापरवाही से बहुत बुरी तरीके से यूज में लिए जा रहे हैं. We should use these resources carefully and not waste them. हमें इन साधनों को बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से यूज में लेना चाहिए और इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए. To save these minerals, we should depend more on sources of energy that will never get used up. For example, solar energy and wind energy. इन खनिज पदार्थों को बचाए रखने के लिए हमें प्रकृति के उन साधनों को यूज में लेना चाहिए जो कभी खत्म नहीं होते और हमें आसानी से मिलते रहते हैं जैसे सूरज से मिलने वाली एनर्जी और आंधी से मिलने वाली एनर्जी. Did you know it took nature 1 million years to create the amount of fuels being burnt by humans today in 1 year? जिस ईंधन को जलाकर मनुष्य 1 साल में ही बर्बाद कर देता है उस ईंधन को बनाने में प्रकृति को 10 लाख सालों से भी ज्यादा लग जाते हैं. इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इनको काम में लेना चाहिए और इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. So I hope you all have followed all what I have taught you today. So please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon given below. Okay? See you tomorrow in the next video. Bye bye.